क्या था? सर एक था डिफरेंस बिटवीन सुपर एनुएशन एंड रिटायरमेंट एंड दूसरा था व्हाई ओनली 8.33% ऑफ मिनिमम बोनस आर इम्प्लीकेबल। सर तो इसका आंसर नहीं मिला, मैंने ढूंढा था, सर्च किया था, बट एक्यूरेट आंसर नहीं मिला मुझे कहीं भी। हर जगह वो मुझे फॉर्मूले मिल रहे थे जो 7,000 के ऊपर लगा के 8.33% दे रहे थे, बट रीजन नहीं मिला। इसके चक्कर में मुझे 33% वाला पासिंग मार्क्स क्यों रहता है ये इसका आंसर मिल गया, बट ये नहीं मिला। अच्छा, वो क्यों होता है? तो उसकी एक स्टोरी है कि जो ब्रिटिशर्स थे हमारे यहाँ, वो 1857 में पहली बार, नहीं 1947 में पहली बार हमारे यहाँ उन्होंने ये करवाया था, एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया था। आई एम सॉरी, आई एम नॉट स्टेटिंग द एग्जैक्ट डेट, बट ये ऐसा ही कुछ था। तो उन्होंने पहली बार मैट्रिकुलेशन की एग्जाम कंडक्ट करवाई थी, तो वहां पे अब उनको ये आइडिया आया कि फिर पासिंग मार्क्स कितना रखना है। तो वो हम इंडियंस को वैसे भी अपने से नीचा ही समझते थे, तो उन्होंने पूछा अपने बॉस से कि क्या है वहाँ इंग्लैंड में पासिंग मार्क्स, तो वहां पे 65% है। तो उन्होंने सोचा कि ये तो हमसे नीचे ही है, तो हाफ कर देते हैं। तो 35.2% ऐसे आ रहा था उनका, आई मीन 35.5% आ रहा था, तो 33% वहां से ले आए। तो वही अभी तक हमारे यहाँ चल रहा है, अनफॉर्चुनेटली हमने चेंज नहीं किया है, बट है ये अच्छा भी नहीं वेरी करता है इंस्टीट्यूट से इंस्टीट्यूट। हाँ, अब ये स्टोरी ऑब्वियसली मुझे नहीं पता कि ये लॉजिकली तो लग रहा है, बट ये सही है या नहीं मुझे नहीं पता, बट ये मिला मुझे, वो नहीं मिला। वैसे अंग्रेजों ने कुछ नुकसान किया नहीं ज्यादा हमारा, ऐसा है ना, फायदा ही कर दिया। 33-35% में अब निकाल लेते हैं हम 8वीं 10वीं 12वीं, ये तो अच्छा है। सोचो 66% रखा होता उनके साथ स्टैंडर्ड, तो क्या हालत होती हमारी। हम सारे ही जूम पे टिके होते अभी भी, स्ट्रगल कर रहे होते पास होने के लिए। फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन वो सब तो शब्द ही नहीं आए होते। सर इतना भी नीचे नहीं है, इतना इन्फीरियर नहीं फील करना चाहिए। सो पहला सवाल था रिटायरमेंट एंड सुपर एनुएशन। और दूसरा था 8.33। So superannuation, as someone rightly mentioned, that there is a ceasing age of employment. After that, it is superannuated. So after that particular age, as an employee, आप काम नहीं कर सकते. That is superannuation. Okay, and retirement, as you have written, there can be different terms of retirement. Okay, so generally retirement is that after that age or after that particular status, your working capacity ceases, मतलब उसके बाद आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करते हैं. जनरली कैसा होता है कि द अदर वे ऑफ लुकिंग एट इट इज ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड लीविंग द सेम ऑर्गेनाइजेशन is a retirement. For all 40-45 years you work the same organization and you exit at the age of 58 or 60, whatever is the company's norm, then it is a retirement. Okay, voluntary retirement is your job is ceased for certain reasons by the organization, by the employer, and they ask you to take a retirement because they don't want to carry the liability, they don't want to maintain the size, they want to downsize the organization, and then they come up with a scheme wherein an employee has an opportunity, to have some lump sum income, and the contract between employer and employee is ceased. Okay, now 8.33. So generally in olden days there was a practice of giving
1 month extra salary as a bonus. अभी भी होता है, अभी as we were discussing the housemaid example last time, या कोई भी ऐसा जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. So to them, when it comes to offering bonus or something, what we do is we offer double the income of that particular month. मतलब आप एक महीने का एक्स्ट्रा पगार उसको दे देते हो, या an amount equivalent to 1 month earning is given as a bonus. Okay. Now 8.33 of basic wage, है ना? Now if you multiply this 8.33 by 12, what is the number? 8.33 into 12 करेंगे तो कितना आता है? Sir, approx 97 के आसपास. 99.96. तो राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो गया? 100. 100% ऑफ बेसिक मतलब कितना? Basic. Double of the basic. हो गया ना? Yes. एक महीने का एक्स्ट्रा पगार हो गया ना? So that is the logic of 8.33. That if you multiply by 8.33 into 12, it becomes 99.9697. Means as good as 100% of the basic. Right? So that is the logic behind this minimum capping of calculation. Okay, so in compensation, any minimum ceiling would be 8.33 of something. You know, even in Provident Fund, there are two contributing factors. One is employee contribution and another one is employer's contribution. Okay, employee मतलब हमारे salary में से एक part deduct होता है और same amount is contributed by the employer also. ठीक है? So there the calculating percentage is 12%. Okay, so generally the base Provident Fund is 12% of your monthly remuneration. Okay, as of now it is being practiced as 12% of your basic salary. तो आपका जो भी कॉस्ट टू कंपनी या सीटीसी एलिमेंट है उसका 12% उसका एक पोर्शन बेसिक कंसिडर होगा और उस बेसिक का 12% इज एन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन. सिमिलरली 12% इज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन इक्वल अमाउंट. और उस 12 में से देयर आर टू कंपोनेंट्स. वन इज पीएफ एंड अदर इज पेंशन. ओके, ईपीएफ एंड ईपीएस. देयर आल्सो द ब्रेकअप इज 8.33 and 3.67. So 3.67 goes to pension fund and 8.33 goes to Provident Fund. Okay. So the logic behind this 8.33 is if you multiply 8.33 by 12, that is annual, it becomes 100%. Okay. Therefore, this logic of minimum capping of 20%. Okay. So good. Now, today we will try to cover two legislations, two important legislations finally, before we move on to another topic. So one of this important legislation is about contract labor. Now, first question is, do you understand what the contract labor is? सुना है कभी ये वर्ड कहीं पे? Yes sir. Like यूजुअली ऐसा होता है कि हम जब भी कोई जॉब या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, अगर हम किसी गवर्नमेंट सेक्टर में ज्वाइन करते हैं तो फॉर एग्जांपल पहले होता था कि 60 इयर्स तक आप काम कर सकते हो कोई एक पर्टिकुलर जॉब के लिए. तो कॉन्ट्रैक्ट पे ऐसा होता है कि फॉर सर्टेन टाइम पीरियड लाइक 1.5 year और 2 year और 3 year, ऐसे एक सर्टेन टाइम पीरियड ऑलरेडी डिफाइंड होता है और वहां पे आपकी अग्रीमेंट ली जाती है दैट you are being provided, you will be being provided this amount of basic salary and this will be your time period of work, and after that you have to either renew it or leave the job depending upon the situation. कुछ ऐसा ही होता है. Correct. If you speak about your college, which is
the most relevance for you as of now. कॉलेज में कुछ एडहॉक प्रोफेसर्स होते हैं, है ना? एडहॉक, दे आर नॉट रेगुलर प्रोफेसर्स और टीचर्स, बट दे आर देयर फॉर अ टाइम पीरियड. एडहॉक, निविदा ऐसा कुछ बोलते हैं हिंदी में. ओके, so this ad hoc is nothing but a limited period employment, okay, on a fixed remuneration. There is no component distribution, lump sum, है ना? So they will have the similar job, but they will be paid in lump sum, and they will not be called as a regular professors or readers or teachers or something. Similarly, you will find that in your college, there will be certain people who, although working in the college, but will not be considered as the regular employee of the college and so on. जैसे कोई सफाई करने वाला है ना, मेड और सर्वेंट्स, या ड्राइवर्स, या some peons, some support staff. Okay, they may not be a part of your college. कॉलेज में फंक्शंस वगैरह होते हैं. उस फंक्शन के लिए जो अरेंजमेंट करते हैं, स्टेज लगाना, लाइट लगाना, म्यूजिक सिस्टम लगाना, so are they people of the college? No, sir. Okay, they are outsourced. Some other party will come in and they will do the job at your college. शादी में खाना बनाने वाला कैटरर घर का लोग होते हैं क्या? नहीं ना. टेंट लगाने वाले घर के लोग होते हैं? नहीं. There are certain people who are expert of that job, right? So आप एक कैटरर को बुलाएंगे और उसको बोलेंगे कि भाई ये मेरा मेनू है, ये लोकेशन है, ये तारीख है, इतने लोग आएंगे, और आपने अपना सारा हेडक उसके सर पे डाल दिया. What you do is you supervise that activity. Yes or no? Yes, sir. Now, जो खाना बनाने वाले लोग, जो लोग टेबल लगाते हैं, जो लोग खाना लगाते हैं, जो लोग सर्व करते हैं, जो खाना बनाते हैं, those cook, those support people, helping people, बर्तन धोने वाले, प्लेट लगाने वाले, है ना, खाना सर्व करने वाले, अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम है, अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो आप बात किससे करते हो? उन लोगों से जो ये सब खाना बना रहे हैं, काट रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, रोटी बेल रहे हैं, पूरी तल रहे हैं, उन लोगों से? No, sir. नहीं. किससे बात करते हैं? Caterer से. केटरर. जो भी उन्हें मैनेज करने वाले. Yes. है ना. तो जिसको आपने बोला था, आप उसको बोलते हैं, बोले भैया यार ठीक नहीं, गुलाब जामुन ठंडे हो गए, पूरी कच्ची है, एक कटहल और एक कद्दू का क्या कॉम्बिनेशन है ना, मटर पनीर में से पनीर गायब है. All these things you complain to the caterer, not on those people who are serving या जो काट रहे हैं, बना रहे हैं. So this is called contracting. This is called contracting. आपने आपका एक्टिविटीज का कुछ हिस्सा किसी दूसरे को हैंड ओवर कर दिया, ठीक है ना, और आप उसको सुपरवाइज कर रहे हैं. सिमिलर सिचुएशन इन द इंडस्ट्रीज आल्सो. Organizations may not deploy people on all its activities of their own. For example, in any industry,
विच इज एन ऑपरेशनल इंडस्ट्री, काम चालू है, मतलब उसका प्रोडक्शन वगैरह चालू है, इट्स इंडस्ट्री विच इज ऑलरेडी इन ऑपरेशन, एंड दे रियलाइज दैट वी आर in need of air condition installation in the offices. ठीक है, तो कंपनी क्या करे, उसके लिए अपने इंजीनियर्स को लगा दे। इट इज अ जॉब विच इज फॉर सम टाइम, मतलब एक बार एसी लग जाएगा फिर वो जो काम के नहीं है ना। देन व्हाट यू नीड इज जस्ट मेंटेनेंस। So company what will do, company will award a contract to someone with the specifications required. 15 AC, XYZ make, XYZ capacity, और ये लोकेशन पे अपने को इंस्टॉल करना है। So then that agency will come, they'll visit the place, they will install the AC, and then there will be an agreement between the company and that organization, वो दूसरा जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, that साल में 4 बार आपको उसका मेंटेनेंस देखना है, कोई फॉल्ट होगा हम कॉल करेंगे, आपको आके रिपेयर करके जाना है। This is called contracting. Okay, if you read the act, Contract Labor Regulation and Abolition Act 1970, तो जो ब्रैकेट में 2 वर्ड लिखे हैं ना, वो इस एक्ट का क्रक्स है। पहला, अगर आपके यहां कॉन्ट्रैक्ट पे लोग काम कर रहे हैं तो उनकी वर्किंग को रेगुलराइज कैसे करना है, और दूसरा, कंपनी में से कॉन्ट्रैक्ट वर्क को कैसे एबॉलिश कर देना है। इट इज नॉट अ प्रेफर्ड वे, मतलब सरकार नहीं चाहती कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे बहुत ज्यादा लोगों को डिप्लॉय करें, है ना, बिकॉज देन एम्प्लॉयर विल रन अवे फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। So the objective is to abolish, and if it is not possible to abolish, then regulate their working conditions. तो जैसे हमने फैक्ट्री एक्ट पढ़ा था, फैक्ट्री को रेगुलेट करने के लिए, वर्कमैन के लिए, सेम थिंग, दिस इज द एक्ट फॉर रेगुलेटिंग और एबोलिटिंग द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एज ए होल। 1970 में इनेक्ट हुआ 5 सितंबर को, 35 सेक्शंस एंड 7 चैप्टर्स। ओके, as I said, the object of this act is to regulate the employment of contract labor. हर जगह आप आपके लोगों को एम्प्लॉय नहीं कर सकते, तो कुछ एक फील्ड ऐसे हैं, कुछ एक एरियाज ऐसे हैं, जैसे हाउस कीपिंग, साफ सफाई करना, कैंटीन चलाना, आपके ट्रांसपोर्ट को मैनेज करना, कुछ पेरेनियल जॉब है, लोडिंग अनलोडिंग का काम है, सामान उतारना चढ़ाना। अंजलि क्यों अंधेरे में चलेगी? सर पावर कट। ओह माय डॉग। सर मैं भूत की तरह दिख रही हूँ क्या? नहीं, खाली आंखें ही दिख रही, बाकी कुछ नहीं दिख रहा। सर बारिश हो रही बहुत ज्यादा इधर, तो इसलिए अरे शायद। इधर भी, बहुत। यहाँ भी बारिश, तो अच्छी चीजें होनी चाहिए। यस सर, अभी जरूरत है बहुत। Okay, so if inconvenient, you can switch off your camera, no worries, as long as audible is possible. ओके सर। तुमको देख के लोग डरेंगे। नो सर, सॉरी। ये क्या सुनाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है? So this is the gist of the act. Section 1, the applicability. कहाँ applicable है? It is applicable to every establishment in which 20 or more workmen are employed on any day of the preceding 12 months. जैसे फैक्ट्री एक्ट था, similarly this is also applicable to any establishment where 20 or more workmen are employed. This is applicable to both. It is applicable to employer, मतलब जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट पे काम दे रही है उसको भी, and it is applicable to the contractor who is receiving the contract. तो कानून आपके पिताजी भी लगेगा जो शादी का कैटरिंग ऑर्डर किसी को दे रहे हैं, और उस पे भी लगेगा जिसने ये ऑर्डर लिया है।
मतलब ये दोनों की जिम्मेदारी है कि इस एक्ट को रेगुलेट करें, मतलब इसमें जो भी लिखा है उसका एनफोर्समेंट, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ द पार्टीज, द एम्प्लॉयर एंड द कॉन्ट्रैक्टर. Okay. So as an establishment who is deploying 20 or more people as a workman must register themselves. So as an employer, they will have to register first. At the same time, when you award the contract, अगर उस कॉन्ट्रैक्टर के 20 या उससे ज्यादा आदमी काम कर रहे हैं तो उसको भी एक्ट एप्लीकेबल है. लेकिन अगर वो काम परमानेंट है, साल में 220 दिन से ज्यादा आपको उस काम की जरूरत पड़ी है, in that case it is not a temporary work but it's a permanent work, and then you cannot have it, you cannot put it on subcontracting, but you have to hire the person on your own role. Is it disconnected? No, sir. Yeah. Okay. Any work which is of seasonal nature, there this is not applicable because it anyway it is for intermittent time. Okay, but if it is not a seasonal, if it is a regular work, and if the work is executed for more than 220 days, then you can deploy. You cannot deploy the contract labor. There are certain obligations for both employer and contractor. Okay. So as long as Sir, the एक code is doubt not, हाँ जी बोलिए. सर अभी जैसे कि 12 मंथ का है ये जो टाइम पीरियड है कॉन्ट्रैक्ट का, ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी कर सकता है या फिर कोई एक फिक्स ऐसा है कि इससे कम टाइम पीरियड के लिए आप किसी को असाइन नहीं कर सकते हो पर्टिकुलर काम के लिए? लाइक नॉट अनरजिस्टर्ड की बात नहीं कर रही, अगर अभी सेमी गवर्नमेंट कंपनीज भी है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, एंड प्राइवेट में तो ये यूजुअली होता ही है, बट अभी गवर्नमेंट सेक्टर में भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाला काम हो रहा है, तो वहां पे कोई एक फिक्स रूल होती है वर्क टू वर्क, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, या फिर नहीं है ऐसा कुछ? अभी है ना ये द एक्ट इज वेरी क्लियर ऑन वर्किंग कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स. पहले तो बोलते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर होना ही नहीं चाहिए, होना चाहिए तो किस केस में होना चाहिए, दैट इज व्हाट एक्ट सेज. In 1960, there was one judgment of Supreme Court, Standard Vacuum Refinery versus their workman. कंपनीज क्या करती हैं? कंपनीज अपनी लायबिलिटीज को बाईपास करने के लिए चीजें कॉन्ट्रैक्ट पे दे देती हैं. ओके, एंड कॉन्ट्रैक्टर अपनी मर्जी से उन चीजों को एग्जीक्यूट करता है. सो टू नैब दैट, मतलब ये जो है ना, इट्स ए रॉन्ग प्रैक्टिस, इट्स एन अनएथिकल प्रैक्टिस. So the judgment is very clear. It says that if the work is perennial and if it is on day-to-day basis, in that case, it cannot be contracted. मतलब आपका कोर मैन्युफैक्चरिंग का काम है, आप चीजें बना रहे हैं और उसमें असेंबली लाइन पे या मशीन ऑपरेशन में आपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर लगा दिया, तो ये गलत है. There you need regular employment only, regular people only. You cannot contract it. You cannot outsource this. कोई काम ऐसा है जो टेम्पररी है, मतलब जैसे रॉ मटेरियल का इनकमिंग एंड डिस्पैच, सपोज वो रोज नहीं है, आप महीने में 1 या 2 दिन आप रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हैं, आपका काम ऐसा है कि आप एक बार ले लेते हैं, बाद में पूरा महीना वो चलता है. तो लोडिंग अनलोडिंग का जो काम है, सामान उतारना चढ़ाना, वो टेम्पररी है. दैट कैन बी ऑन कॉन्ट्रैक्ट. You don't need very expert people. You don't need an expertise. You don't need very high skill, but you need people to execute that work. ठीक है, और कोई भी आएगा तो वो काम कर सकता है, उसके लिए कुछ बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, माल उतारना है, एक जगह रख देना है. तो इन दैट केस इट कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड. देन साफ सफाई का काम, उसके लिए बहुत हाई स्किल्ड का जरूरत नहीं है.
it can be contracted. But if the work is incidental and necessary to the work of the factory, then it cannot be outsourced. It cannot be contracted. ओके सर. है ना? अगर वो काम ऐसा है कि उसपे फुल टाइम लोग भी काम कर रहे हैं, तो फिर पार्ट टाइम या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर आप डिप्लॉय नहीं कर सकते. मतलब वही काम एक कॉन्ट्रैक्ट वाला भी कर रहा है और वही काम एक परमानेंट एम्प्लॉय भी कर रहा है. इन दैट केस आल्सो यू कैन नॉट डिप्लॉय द कॉन्ट्रैक्ट वर्कर. इंस्टेड यू विल हैव टू मेक देम परमानेंट. Okay. So this is the judgment of Supreme Court. And this judgment is about regulating the contract workers. Not abolition, but regulation. There are two major terms, principal employer and contract workers. Principal employer मतलब वो आदमी जिसने अपनी चीजों को सब कॉन्ट्रैक्ट किया है, आउटसोर्स किया है. शादी की बात करेंगे तो आपके पिताजी इज अ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर and that caterer is a contractor. Okay, who can be a principal employer? Any head of the department, head of the office, district magistrate, Yes. SDM, whosoever is there. In case of factory, again the same thing, where what we discussed in the Factory Act as well, the occupier or the factory manager or anyone who is named under a factory manager under the Factories Act 1948. In case of mine, owner or agent of the mine and manager. In any other establishment, any person responsible for the supervision and control of the establishment. He is the principal employer. उसकी जिम्मेदारी बनती है. कॉन्ट्रैक्ट वर्कर ऐसा कोई भी आदमी जो आपकी प्रीमाइस में आपके लिए काम कर रहा है, आपको पता है या नहीं. शादी के कैटरिंग के कॉन्ट्रैक्ट में खाना बनाने वाला कौन है वो हमको पता नहीं होगा. बट फॉर अ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ही इज आल्सो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर. ओके, तो अगर उसको कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की है, खाली कॉन्ट्रैक्टर की नहीं है. So any worker will be a contract labor when he is hired for work of establishment through a contractor with or without the knowledge of the principal employer. आपको पता हो या नहीं पता हो, लेकिन अगर आपकी प्रीमाइस में वो काम कर रहा है और किसी ने उसको हायर किया है, आपने नहीं किया तो किसी और ने किया है. जो सिक्योरिटी गार्ड, उसको आप हायर नहीं करते, उसको कोई थर्ड पार्टी, कोई सिक्योरिटी एजेंसी हायर करती है और आपके डिप्लॉय कर देती है. आपकी सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड. सर एक क्वेश्चन है. अभी पहले आपने ये बोला कि जो डे टू डे काम है उसमें आप कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं असाइन कर सकते हो किसी को, तो सर सिक्योरिटी गार्ड का भी तो वर्क डे टू डे होता है, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे क्यों लेते हैं? सिक्योरिटी नहीं आएगा तो प्रोडक्शन रुक जाएगा. नो सर, बट एक इम्पोर्टेंट आपकी सोसाइटी में गेटवेट है? यस सर. ओके, उस पे वॉचमैन बैठता है? यस सर. अगर वॉचमैन नहीं आएगा तो गेट नहीं खुलेगा, ऐसा होगा? नो सर, खुलेगा. आप खुद खोलोगे ना? या ऐसा हो जाएगा कि भाई अंदर है तो अंदर रहेगा, बाहर से बाहर रहेगा, क्योंकि आज वॉचमैन नहीं आया तो गेट बंद? नो सर. है ना? सो सिक्योरिटी इट इज नॉट इंसिडेंटल टू योर प्रोडक्शन. ओके. जहाँ पे प्रोडक्शन पे कोई लोड पड़ रहा हो वहां पे ये बोल सकते हैं, बट जो लाइक यहाँ पे एक जनरलाइज ऐसे कर सकते हैं कि जो काम किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की वजह से नहीं भी हो पा रहा है या हो जा रहा है, वहां पे नहीं, वहां पे हम कॉन्ट्रैक्टर को ले सकते हैं. वहां हमको अवॉइड करना है, वहां हमको कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर सकते हैं. अगर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड चीजें हैं तो वहां पर हमको कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करना है. Okay, there you can deploy people for material movement. For material movement, you can deploy people on contract for loading, unloading, for shifting of material. There you can deploy people where you don't need, a specific skill set. But if it is a machine operation, if it is directly in process, directly in production activity, then you should not deploy any contract worker. ठीक है ना?
Who is a contractor? A person who undertakes the contract. The caterer is a contractor. Workman, any person employed in or in connection with the work of any establishment to do any sasta work, skilled, semi-skilled, unskilled, manual, supervised, technical, clerical work for hire or reward, whether terms of employment are express or implied. मतलब ऐसा कोई भी आदमी जो किसी भी स्किल लेवल पे काम कर रहा है, उसके टर्म्स और कंडीशंस लिखित हैं या मान लिए गए. मतलब अब हर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को तो आप अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देते ना. ओके, कुछ लोग फ्री में काम करते होंगे, वो लोग पैसे लेके काम करते होंगे. तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर ऐसा है तो देन इन दैट केस इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट वर्कर और इट्स ए वर्कमैन हु इज कवर्ड अंडर दिस एक्ट. कौन कवर नहीं है? जो मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी पे काम कर रहा है उसको अपन वर्कमैन नहीं बोलेंगे. जो सुपरवाइजरी रोल पे काम कर रहा है उसको हम वर्कमैन नहीं बोलेंगे. कोई ऐसा आदमी जो सिर्फ मटेरियल सप्लाई कर रहा है और बाद में वापस ले लेता है, ही इज नॉट अ वर्कमैन. He is just giving you the tools and tackles and instrument for executing the work, and then he is taking it back after the job is done. These are not workmen. Other than them, everybody is a workman. So any manager, factory manager, occupier, anybody who is working in the capacity of a supervisor. So workman का definition इसमें और Factories Act में अलग अलग है. Okay, in Factories Act everybody is workman. As far as contract labor is concerned, those who are in the supervisory capacity, they are not workmen. Okay, or a wage. Abhi in the act, it is 500 rupees per mention. मतलब काम करने का लागत 500 रुपया उससे ज्यादा है तो वो सुपरवाइजर्स कैटेगरी में आ सकते हैं या वर्कमैन की कैटेगरी में नहीं आएंगे. ठीक है. और अगर किसी ने खाली मटेरियल सप्लाई किया है, कुछ लेबर नहीं है, सामान दे दिया, हथौड़ा छेनी दे दिया, देन ही इज नॉट अ वर्कमैन. आप अपने हिसाब से काम करो. चैप्टर 3 सेक्शन 10 6 to 10 registration of establishment employing contract labor. This is for the employer. This is for you as an HR manager. अगर आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को हायर करना है एज कॉन्ट्रैक्ट वर्कमैन, in that case you are required to register your organization or establishment as a principal employer that I want to hire or I want to engage contractors or contract workmen in my organization. There are forms in which you have to make an application to GLO, the labor office, and they will grant you the registration. Now this has become an online process. So Ministry of Employment, रोजगार मंत्रालय, उसकी एक साइट है उद्यम, उसके थ्रू आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं एज ए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर फॉर हायरिंग पीपल ऑन कॉन्ट्रैक्ट. So it is an online approval process wherein you get a certification of registration that you are allowed to hire people on contract. Okay, without this you cannot engage contract employees. Okay, तो अगर आपके पास 20 या उससे ज्यादा लोग हैं एज ए कॉन्ट्रैक्ट, देन यू मस्ट हैव द वैलिड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन एज ए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर टू एंगेज कॉन्ट्रैक्टर्स. Same time, a contractor should also have a valid license. He is also required to apply for labor license. तो आप क्या करते हैं, आप अपने आप को पहले रजिस्टर करते हैं एज ए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर. बाद में आप जिसको भी आपने कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे लेना है उसको आप एक लेटर इश्यू करते हैं, फॉर्म 5. ठीक है. आप उस कॉन्ट्रैक्टर को एक लेटर इश्यू करते हैं जिसमें आप उसको बोलते हैं कि भाई मुझे इतने लोग इस काम के लिए जरूरत है. आई नीड 50 people for housekeeping activity or for loading and unloading purpose or for XYZ activity.
कॉन्ट्रैक्टर आपका वो लेटर लेके he'll go to labor office and he will apply for a license कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है, 50 लोग डिप्लॉय करने हैं, तो प्लीज ग्रांट मी लेबर लाइसेंस. So labor office on justification and on receipt of the necessary fee, they will grant him a license to engage laborers and deploy at the place where he has got this contract. Now, this license will have the specifications. Okay, what it will have? It will have how many people, number of hours of work, फिक्सेशन ऑफ वेजेस, कितना पैसा मिलेगा, क्या होगा, और बाकी एमिनिटीज उस प्लांट में हैं और आप उसको एज ए कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड करोगे. द वैलिडिटी ऑफ दिस लाइसेंस इज 1 year एंड एवरी ईयर दिस लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू बी रिन्यूड. तो आप लाइसेंस देने के बाद उसको 11 महीने तक यूज कर सकते हैं. 11 महीने होने के बाद में यू हैव टू अप्लाई फॉर रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंस. अगर 30 दिन में जवाब नहीं आता है तो इट इज कंसिडर्ड एज डीम्ड अप्रूव्ड. अगर रिजेक्ट नहीं हुआ है, अगर कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो इट इज एन अप्रूव्ड लाइसेंस एंड यू कैन कंटिन्यू. ओके, दिस इज हाउ इट इज इंटरप्रेटेड. लाइसेंस में क्या ध्यान रखना है? इट इज नॉट ट्रांसफरेबल. मतलब आपने एक कॉन्ट्रैक्टर को दिया, उसने किसी और को दे दिया लाइसेंस, देन इट इज ए डिफॉल्ट फॉर एम्प्लॉयर. प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के लिए वो नुकसान है. आपने एक कैटरर को एंगेज किया, उसने वो कैटरिंग का काम किसी दूसरे को दे दिया. अभी आप मिस्टर एक्स से बात कर रहे हैं, आपके काम मिस्टर वाई करेगा. तो आपस में दिस ट्रांसफर ऑफ लाइसेंस इज नॉट अलाउड एज फार एज मैन्युफैक्चरिंग इज कंसर्न. ठीक है, विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर. If at all he wants to do so, the other person will have to apply for a fresh license. And he will be a contractor directly with the principal employer. Or even if it is a subcontracting firm, everyone will have to have a valid license. लाइसेंस में जितना नंबर बोला था उससे एक भी आदमी ज्यादा एज ए कॉन्ट्रैक्ट वर्कर आपके यहाँ डिप्लॉय नहीं हो सकता है. 50 का रिक्वायरमेंट था, किसी एक दिन अगर 51 लोग आ गए, then it is a default. Then you have violated the terms and conditions of the license. सैलरी आपने जितना बोला उससे कम दे रहे हैं, वर्किंग आवर्स आपने जितना बोला उससे ज्यादा काम करा रहे हैं, और जो फैसिलिटीज आपने बताई थी उसमें से कुछ भी नहीं मिल रहा है. इन दैट केस अगेन एज ए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर यू आर डिफॉल्टिंग. एनी चेंज मेड इन द वर्किंग कंडीशन, if it is defaulted and not informed, then also the license is invalid and principal employer is defaulted. Chapter 6 of the Act, it talks about welfare and health. The same thing we studied in Factories Act as well. Factory Act में general था for workmen. Here it is specifically for contract work. More or less this remains same. तो अगर आपकी फैक्ट्री में 500 लोग काम कर रहे हैं, उसमें से 250 कॉन्ट्रैक्ट के हैं और 250 परमानेंट हैं, एज ए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर योर ऑब्लिगेशन फॉर ऑल 500 पीपल. भले वो 250 आपके सीधे हैं या उल्टे हैं, डायरेक्टली हैं, इनडायरेक्टली हैं, आपको पता है नहीं पता है, बट एज ए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दोज 500 पीपल. सो व्हाट आर द वेलफेयर दैट द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू इंश्योर? कैंटीन, restroom, drinking water, sufficient latrines and urinals, washing facilities. कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, ऐसी जगह पे काम कर रहे होंगे जहां पे उनको फ्रीक्वेंट क्लीनिनेस का जरूरत पड़ेगा, है ना. सो इन दैट केस एडिक्वेट वॉशिंग फैसिलिटी, हाथ पैर धोने के लिए, मुंह धोने के लिए, फ्रेश होने के लिए, आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए, एंड बेसिक फर्स्ट एड फैसिलिटीज. कुछ चोट लगता है, इंजरी होता है, इस केस में उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट मिले, द फर्स्ट एड दैट. नाउ ऑल दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, है ना. वो कैटरर का जिम्मेदारी है कि जितने भी लोग आपके यहाँ डिप्लॉय किए, उसने खाना बनाने के लिए, सर्व करने के लिए, प्लेट धोने के लिए, उन सबको ये सारी चीजें मिले.
ठीक है। अब हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्टर इस कैपेसिटी में नहीं कि हर जगह जाके कंस्ट्रक्ट करे। ठीक है, आपने बोला कि 1000 लोगों के लिए खाना बनाना है, वो बोला साहब 20 लोग लगेगा। ओके, और इन 20 लोगों के लिए मुझे बैठने का जगह और ये बर्तन धोएंगे, सामान, इसका जो भी जगह है वो आपको मेरे को अरेंज करके देना पड़ेगा। तो एज ए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ही कैन फैसिलिटेट द कॉन्ट्रैक्टर, उसका चार्ज जो चाहे तो रिकवर कर सकता है। ओके, मतलब आपने ऐसा बोला उस कैटरर को कि मेरे 1000 लोग, आई हैव इन्वाइटेड 1000 पीपल, हमको 1000 लोगों का खाना बनाना है और 25 आइटम्स है मेनू में, सलाद से लेके डेजर्ट तक। ठीक है, और से 4 या 5 काउंटर लगेंगे एंड दिस इज हाउ इट इज टू बी सर्व्ड। ओके, सो कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा कि ठीक है सर, पर प्लेट 200 रुपीज, दैट इज व्हाट आई विल चार्ज, whatever is the negotiated value. Now this 200 rupees per plate includes everything. ठीक है, खाना, सर्विस, सप्लाई, अरेंजमेंट, दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला। देन एट द टाइम ऑफ द इवेंट आपको लगता है कि यार कुछ चीजें ऐसी जो उसने ठीक से नहीं की है ना। लाइटिंग के लिए आपने किसी को बोला था कि सब लाइटिंग वाइटिंग लगा देना, उसने अच्छा अरेंजमेंट, ही हैज डन अ वेरी गुड डेकोरेशन। ओके, बट परहैप्स उसने कोई बैकअप अरेंज नहीं किया, लाइट चला गया चालू बारात में, ये चालू डिनर में उधर जयमाला हो रही, इधर बत्ती जला गया, गलत गले में डाल दिया अंधेरे में, पता ही नहीं चला। ओके, तो अब ये रिस्क है। इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए आप के फादर ऐसा बोलेंगे कि यार ये सब ठीक है, डेकोरेशन इज वेरी गुड, बट देयर इज नो जनरेटर, नो बैकअप, लाइट गया तो कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा मेरे पास इसका अरेंजमेंट नहीं है। देन एज ए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर यू विल से दैट ओके आई विल अरेंज द जनरेटर, बट उसका जो भी कॉस्ट होगा ना वो मैं तेरी पेमेंट में से रिकवर कर लूंगा। इट वॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, you are not doing it, I have to do it, so I will do it on your behalf and I will recover this amount, I'll recover these expenses from your final payment, right? So this is how a principal employer can negotiate with contractor. हर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का प्रोविडेंट फंड भरना, हर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को बोनस पेमेंट करना, हर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का ग्रेजुटी पेमेंट करना, हर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को ओवर टाइम पेमेंट करना, अगर वो ज्यादा काम कर रहा है तो उसका यूनिफॉर्म, सेफ्टी शूज, खाने का पैसा, एवरीथिंग। ओके, इट इज ए कॉन्ट्रैक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्टर वर्कर साहब 20 लोग हैं, कहाँ कैंटीन बनाऊं मैं, मुझे तो कैंटीन ज्यादा खर्च, मुझे तो उससे जो इनकम नहीं होगा ज्यादा खर्चा कैंटीन बनाने में हो जाएगा, और पता नहीं 6 महीने बाद आप बोलोगे मुझे जरूरत नहीं है, तो मेरा तो खर्चा बेकार हो गया। So the employer can say that, okay, your contract workers can have food in my canteen. This is what I am charging for my employees. Same thing I will recover from your bill. So 10 rupees per head per meal. This is the calculation. This is what I will recover from your bill. तो आपको जो फाइनल पेमेंट करूंगा उसमें मैं कैंटीन का पैसा रिकवर कर लूंगा। प्रोविडेंट फंड अगर आप नहीं भरेंगे तो मैं भरूंगा, लेकिन आपके बिल में से रिकवर कर लूंगा। ग्रेजुटी आप पेमेंट करेंगे तो मैं आपको रीइंबर्स करूंगा। इफ यू विल पे आई विल गिव यू, इफ यू विल पे आई विल नॉट पे यू। लायबिलिटी है, एज ए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर आई विल पे, आई विल रिकवर फ्रॉम योर बिल। आप जो भी मुझे इनवॉइस देंगे मैं उसमें से रिकवर कर लूंगा। Okay, but these are the basic amenities which any contract worker will deserve, and the act says that it must be provided. It is the responsibility of contractor, but if the contractor is unable to do, then principal employer is liable to provide the same. ठीक है, for money or without, बोलेगा ठीक है चलो खाना मेरे 20 लोग हैं ना, कोई बात नहीं, I will bear the expense, but they'll have food in my canteen. So any arrangement, any negotiation is possible, but facilities has to be there. कैंटीन कितना होना चाहिए, 100 या उससे ज्यादा लोग होंगे तो कैंटीन इज मैंडेटरी। रेस्ट रूम,
sufficient supply of drinking water. Now all these are available in the route. Contract labor regulation and abolition rule जो है उसमें कितना होना चाहिए, क्या नंबर होना चाहिए, क्या स्पेसिफिकेशंस है, सेम एज फैक्ट्रीज एक्ट, दिस आल्सो इज अ सेंट्रल रूल एंड देयर द नंबर्स आर गिवन. Okay, this as we discussed, contractor is not able to provide the facility, the principal employer will provide and he can recover from the contractor's payment. ठीक है, आप नहीं देंगे तो मैं दे दूंगा और आपके पैसे में से काट लूंगा. क्या और कितना चाहिए, दिस इज वन मैट्रिक्स, दिस गिव्स द नंबर्स. 100 या उससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर होंगे और 6 महीने से ज्यादा काम किया है तो आपको एक कैंटीन का जरूरत है. तीन महीने से ज्यादा का अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है और उस आदमी को रात को रुकने का जरूरत है, उसका घर नहीं है कि बाहर से डिप्लॉय किया है, तो उसके रेस्ट रूम का अरेंजमेंट भी करना होगा. दैट इज कॉन्ट्रैक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्रैच इज नंदघर या छोटे बच्चों को रखने की जगह. तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 20 या उससे ज्यादा फीमेल वर्कर्स काम कर रहे हैं, इन दैट केस क्रैच होना मैंडेटरी है. कॉन्ट्रैक्टर नहीं होगा तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर विल हैव टू हैव इट, बट दिस फैसिलिटी हैज टू बी देयर. ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी, इट हैज टू बी सफिशिएंट. 25 लोगों के बीच में एक लैट्रिन एंड यूरिनल, वॉशिंग फैसिलिटी एंड फर्स्ट एड. So one ambulance room, at least one first aid box for every 150 contract laborers. ये कुछ specifications हैं जो दिए हैं रूल में. And again, the state has the authority to amend and increase or decrease and force on these numbers. What are the obligations of a contractor? A contractor is responsible for payment of wages to each worker employed by him. जितने भी लोग रखे हैं, वो जो भी कैटरर में लड़के थे ना, जो खाना बना रहे हैं, भाजी काट रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, प्लेट धो रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, उन सबको पैसा देना कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है. टाइम से पहले पेमेंट करना वो कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है. सो एक्ट सेज दैट वेयर देयर आर लेस देन 1000 पीपल बिफोर 7th day of every month, wages to be paid. And if it is more than 1000 people, before 10th day of every month, wages to be paid. मतलब जल्दी से जल्दी 7 तारीख, लेट से लेट 10 तारीख तक पगार हो जाना चाहिए सबका. नो वेजेस पीरियड शैल एक्सीड 1 month. मतलब 2 महीने का, 3 महीने का एक साथ में देंगे ऐसा नहीं. It has to be paid monthly. Okay, even if it is a daily wage worker, there can be an arrangement where either it should be paid daily or within a month. So after 26 days, 7 days का पेमेंट पीरियड, तो 7 तारीख तक या मैक्सिमम 10 तारीख तक आपको पेमेंट कर देना है. Wages of terminated worker shall be paid before the expiry of the second week. मतलब अगर कोई सेकंड वर्किंग डे, अगर कोई वर्कर छोड़ के चला जाता है या आपने निकाल दिया है, तो जिस दिन आपने उसकी सेवा समाप्त की थी उसके 2 दिन के अंदर उसका फुल एंड फाइनल हो जाना चाहिए. मतलब जो भी हिसाब बनता है 2 दिन के अंदर उसको पेमेंट कर देना है. दैट इज कॉन्ट्रैक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. पेमेंट डायरेक्टली उस वर्कर को होगा. अभी तो ऑनलाइन हो गया. ओके, सो देन एम्प्लॉयर, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर विल आस्क फॉर द पेमेंट स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, कि जितने लोग आपके साथ काम कर रहे थे उन सबका पैसा आपने उनके खाते में जमा किया है, उसका स्टेटमेंट चाहिए. उन सबका प्रोविडेंट फंड आपने जमा किया है, उसका स्टेटमेंट चाहिए, चलन. ओके, उन सबको आपने नेसेसरी पेमेंट्स कर दिए हैं, डिडक्शन कर दिया है, रिकवरी ले लिया है, उसका स्टेटमेंट चाहिए. Once that statement is received, then only you will release the payment to the contractor. Okay, and if there is any default, you will address in subsequent month. Then necessary registered maintaining. तो उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट मेंटेन करना है वो भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सॉरी कॉन्ट्रैक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी. प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी मोटे तौर पे यही है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपनी ड्यूटी ठीक से कर रहा है कि नहीं.
whether the wages has been paid on time, necessary facilities are provided or not, खास करके पैसा, any extra work is compensated or not, the health and working condition of the contract workman is taken care of or not. If the contractor fails to make payment, अगर कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट नहीं करता है तो इट इज प्रिंसिपल एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द पेमेंट्स. अगर उसने पैसा नहीं दिया तो आपको देना पड़ेगा, अगर उसने जमा नहीं किया तो आपको करना पड़ेगा. एंड देन यू कैन रिकवर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर और एल्स यू गो टू द लिटिगेशन. Number of register that is to be maintained. There are different forms and the purpose. Form number 12. This is about all the contractors that has been engaged by the principal employer. Register of person employed, जो लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं as a contract worker, उसका details. Employment card, that is a kind of your I card. Service certificate. Muster roll मतलब उनका अटेंडेंस, कौन एब्सेंट है कौन प्रेजेंट है, कितने दिन आया कितने दिन काम किया. रजिस्टर ऑफ वेजेस, आपने उनको क्या पैसा दिया, कितने दिन का दिया, कब दिया. एंड ऑल these form numbers are defined and the format is also prescribed. So register of deduction, register of fine, register of advances, register of overtime and wage slip, पगार का salary slip, all these are to be maintained. So the first one, form 12, is to be maintained by principal employer. और बाकी के जो भी चीजें हैं, this is the obligation of contractor. But if contractor fails to produce, it is principal employer who will have to produce this. Okay, तो अगर contractor नहीं बना रहा तो आपको उसके पास बनवाना पड़ेगा. Then there are annual returns. Return मतलब एक annual statement that goes to labor office in form 25. हाफ ईयरली रिटर्न अभी बंद हो गए, अभी इट्स ओनली एनुअल रिटर्न. सो इन फॉर्म 25 इट इज सबमिटेड टू द लेबर कमिश्नर और फैक्ट्री इंस्पेक्टर बिफोर द स्पेसिफाइड डेट, हैविंग ऑल द डिटेल्स एज मेंशन्ड इन द फॉर्म. तो फॉर्म वी आर नॉट डिस्कसिंग एज ऑफ नाउ. Okay. Then appropriate government and all these things, abhi for a while we will not discuss on this. Consequences of abolition. Abolition मतलब हटा देना, contract worker को हटा देना. So when you abolish the contract worker, your contract gets eliminated. Contractor भी और contract भी. Contract labor does not automatically become direct employee of principal employer. अगर आपने उस contract को terminate कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि सीधे आपके principal employer के आदमी हो जाएंगे. There are different cases on this, okay, wherein people have gone to the court that we are directly employed by the principal employer. Okay, but it is not automatic. कि अगर आपने contract seize कर दिया तो उसके सारे लोग आपके रोल पे आ जाएंगे, ऐसा कोई ऑब्लिगेशन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को नहीं है. ओके, डिस्प्यूट इज एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड कॉन्ट्रैक्टर, या कॉन्ट्रैक्ट वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर, या कॉन्ट्रैक्ट वर्कमैन एंड कॉन्ट्रैक्टर. दे आर कॉल्ड डिस्प्यूट, मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट, एंड देन दे आर एड्रेस्ड एंड रिजॉल्व्ड इन प्रॉपर फोरम्स. ओके, तो लेबर ऑफिस, लेबर कोर्ट या एपेक्स कोर्ट्स. Here, as a HR practitioner, हमें क्या ध्यान रखने का जरूरत है? See, whenever you are deploying any contract worker, so as a HR head, HR manager, सबसे पहला चीज हमको ये ध्यान रखना है कि जितने भी वर्कमैन हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उनको कोई भी कंपनी का आदमी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं देगा. ओके, नंबर 2, they are not directly supervised by any of the company employee.
उस कैटरर के नीचे जितने भी लोग काम करते, 20-25 लोग है ना, जो सब्जी भाजी काट रहा है, तरकारी बना रहा है, पूरी तल रहा है, गुलाब जामुन छान रहा है, प्लेट लगा रहा है, धो रहा है, काउंटर सेट कर रहा है, उन सभी लोगों को आप एज ए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे. ओके, दैट इज नंबर 2. नंबर 3, उनके किसी भी डॉक्यूमेंट पे किसी भी एम्प्लॉय का डायरेक्ट सिग्नेचर या ऑथेंटिकेशन नहीं होगा. मतलब अगर आपने एक अपॉइंटमेंट लेटर इश्यू किया है, so that appointment letter will be issued by contractor to the workman, and it is never signed by any HR manager of the company. उसका कोई गेट पास है आने जाने का, परमिशन, जल्दी चला गया, देर से आया, लेट आया, छुट्टी के लिए अप्लाई किया, it has to be authorized, approved, endorsed, signed by the contractor's supervisor and not by company supervisor. आपके पास रिकॉर्ड के लिए हो सकता है, लेकिन आपने उसको कुछ भी चीज डायरेक्टली ग्रांट नहीं करना है. अगर हो रहा है तो उसको रोकना है. These are the tools that becomes important when any contract workman claims permanency in the organization. कल उठ के वो बोलेगा कि साहब यही लोग तो मेरे पास काम कराते थे, हमें इंस्ट्रक्शन कंपनी के लोग ही देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर का सुपरवाइजर तो आता ही नहीं है. छुट्टी के एप्लीकेशन पे एचआर हेड ने साइन किया है, एचआर मैनेजर ने साइन किया है, एचआर टाइम ऑफिस वाले ने साइन किया है, उनके गेट पासेस पे आपके सिग्नेचर है, which means they are directly controlled by you. In that case, they are not subcontractor, but they are your direct employees. Okay, so these are the care that you as an HR manager are required to take whenever you are engaging any contract worker. So nothing directly, nothing straight to the workman. Everything and anything has to be routed through his supervisor, which is again a contract person. वो कॉन्ट्रैक्टर ने किसी को डिप्यूट किया होगा, उसके थ्रू ही इंस्ट्रक्शन पास ऑन होना चाहिए, because that supervisor is anyway, he is not a workman. So that supervisor is deployed by the contractor to look after his people, to get the work done which has been assigned to him to do. Okay, कहाँ आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर एम्प्लॉय कर सकते हैं? हाउसकीपिंग, इट कैन बी कॉन्ट्रैक्ट लेबर. हॉर्टिकल्चर, गार्डनिंग वगैरह का अगर काम है आपके प्रीमाइस में, देन इट कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड. लोडिंग एंड अनलोडिंग, सामान को उतारना चढ़ाना ट्रांसपोर्ट में. मटेरियल मूवमेंट, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना प्लांट में. कैंटीन चलाना है ना, तो कैंटीन में जो लोग हैं, इट कैन बी आउटसोर्स, इट कैन बी गिवन. सिक्योरिटी एंड विजिलेंस है ना. So these are the places, these are the areas where you can deploy contract people, because there for me it is important that मेरा कैंटीन चलना चाहिए. 8 लोग आएंगे, 10 आएंगे, 15 आएंगे, राम आएगा, श्याम आएगा, गोलू आएगा, भोलू आएगा, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है. मुझे सिर्फ इतना कंसर्न है कि 11 बजे मेरा कैंटीन ऑपरेशन होना चाहिए और मेरा कोई भी एम्प्लॉय भूखा नहीं रहना चाहिए. दैट इज व्हाट आई नीड. सो उसके लिए मैं खुद अपना महाराज रखूं, अपना खानसामा रखूं, अपने 25 लोग लगाऊं, नॉट नेसेसरी. So I will source it through some agency, then it can be outsourced. Security, I'm not an expert. Okay, so what I can do is I can tell some agency to deploy security guards in my premise to ensure my premise is taken care of. तो 5 लगाना है, 15 लगाना है, 25 लगाना है, अगेन वही राम श्याम गोलू मोलू, वो सब उस एजेंसी का जिम्मेदारी है ना. What I need is ढंग के लोग होने चाहिए, ऐसे लोग जो मेरी प्रीमाइस को सेफगार्ड कर सके, जिनको खुद सहारे की जरूरत है, ऐसा लोग मुझे नहीं चाहिए. Okay, so that is the condition which an employer will have with a contractor, but these are the areas where you can deploy contract people. There are 3 cases, important cases.
which you must refer. आप ये तीनों केसलेट पढ़ के in next session you will tell me what this case was about and what was the judgment. ओके सर। है ना, कंसर्न क्या था और उसका वर्डिक्ट क्या था, माय लॉर्ड ने इसमें हमको क्या गाइडलाइंस सैंक्शन किए हैं. गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सरकार के सामने केस था, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. देन एयर इंडिया स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनाइटेड लेबर यूनियन एंड अदर्स, एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्सेस नेशनल यूनियन ऑफ waterfront workers. These are three major cases on regulation and abolition of contract labor. You read this for all three cases. What was the context, concern या issue क्या था और क्या verdict है. Finally, what are the outcomes, what are the guidelines, or what are the narrations Honorable Supreme Court or respective court has given in these cases. ठीक है. And this will be in the form of a presentation. Okay, no verbal discussion. 1, 2, 3, whatever number of slides you want, but it has to be a presentation wherein you will state what was the case, what was the dispute, and what are the final verdict, and your understanding about this entire thing. Okay, this we will discuss perhaps next Saturday when we'll be meeting again. Now, in a situation where an organization ABC has outsourced any services, say transport of some senior staff to a company EFG, EFG again has outsourced it to 35 different vehicle owners cum drivers. ABC करके कंपनी है, उसने क्या बोला, उसने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है EFG, उसको बोला कि मेरे जो स्टाफ है उनको लाने ले जाने का काम है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर. ठीक है. और ये काम आई एम आउटसोर्सिंग, आई एम नॉट अ ट्रांसपोर्ट ओनर. तो मैं इतना 25-50 बस खरीदना, उसके लिए ड्राइवर रखना, फिर उसका पूरा ट्रांसपोर्ट मैनेज करना, उसका पार्किंग देखो, ये देखो, वो देखो, वो सब मुझे नहीं चाहिए. But there is someone who is already a service provider who is catering such activities for other organizations. So I also contacted him and I gave him the contract. उसने क्या किया, उसने, उसके पास तो है नहीं इतना सारा गाड़ी, उसने और दूसरे 35 व्हीकल ओनर्स को उसने वो चीजें 35 लोगों में बांट दी. सो मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला, मेरे पास 10 गाड़ी था, मैंने अपना 10 लगा दिया, और बाकी 35 व्हीकल्स मैं आजू बाजू वालों को बोल दिया, मेरे पड़ोसी को बोल दिया भाई तेरा 4 गाड़ी लगा दे, सुबह 8 बजे उठाना है, शाम को 4 बजे छोड़ देना है. दूसरे वाले को बोला कि तेरे पास 15 गाड़ी है, तू लगा दे. तीसरे को बोल दिया, चौथे को बोल दिया गाड़ी तेरी, ड्राइवर तेरा, इतना पैसा मिल जाएगा पर ट्रिप पर किलोमीटर. समथिंग हैज बीन एग्रीड बिटवीन मी एंड द अदर व्हीकल ओनर्स. Okay, now the question is, number 1, who is the principal employer and what are the responsibilities of the contractor? इस केस में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन है और कॉन्ट्रैक्टर का क्या जिम्मेदारी? Principal employer is organization ABC. एबीसी ने ईएफजी को बोला, ईएफजी ने एक्सवाईजेड को बोला, एक्सवाईजेड ने और किसी को बोला. Okay, so take this caselet, study, come back next week. It's not hard and fast कि अभी का भी जवाब देना है. So फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन है और कॉन्ट्रैक्टर का क्या जिम्मेदारी है. दूसरा सवाल है, कॉन्ट्रैक्टर ने खुद एक भी आदमी को हायर नहीं किया, ईएफजी ने एक भी आदमी अपने कॉन्ट्रैक्ट पे तो रखा नहीं, उसने बाकी लोगों को बोल दिया कि गाड़ी भी तेरी, आदमी भी तेरे. एबीसी ने ईएफजी को बोला कि मेरे को सर्विस चाहिए,
तेरे आदमी नहीं चाहिए. सो इन दैट केस एबीसी और ईएफजी उन दोनों के ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां हैं एज पर द एक्ट, व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस of the company ABC and contractor EFG. Okay, this 3 questions. I put up the screenshot, screenshot on the group also. So you can use this. Few more questions as an assignment. Yeah, homework. What are the advantages and disadvantages of appointing a contract labor? Contract labor के लिए भी minimum wage applicable है. और statutory payments करना जरूरी है क्या? Answer I'm skipping. You can have it. You can think. And then we can discuss in the next week, and the answers you can put it on the group also, so that we can have a pre-read, and then if the discussion is required, we can have a discussion. Another important act, the last in the basic labor laws is about Industrial Employment Standing Order Act 1946. This act generally talks about the working conditions. आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर्स है ना, किसी भी ऑफिस जो अपॉइंटमेंट लेटर्स है, इस अपॉइंटमेंट लेटर का बेस है दिस पर्टिकुलर एक्ट. मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर बोलते हैं इसको. Okay, we call it as a model standing order. Okay, yeah, Industrial Employment Act 1946. This was enacted on 23rd of April 1946, and there are 15 sections. Standing order, matlab, yes, this has the basic guidelines of employment and discipline. अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो क्या सजा है और गड़बड़ी किसको बोलते हैं, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मिसकंडक्ट में आती हैं, और आपका जो टर्म एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, अपॉइंटमेंट लेटर, दैट इज derived through this model standing order. Okay, or the standing order. So the act is applicable to whole of India, applicable to every establishment where 100 या उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं. Again, the workman definition is same. Once applicable is always applicable. मतलब अगर आपने एक बार 100 से ज्यादा लोग हो गए तो आपके एप्लीकेबल है, उसके बाद 90 हुए, 80 हुए, 70 हुए, 10 हुए, फिर भी ये एक्ट एप्लीकेबल रहेगा. Okay, same thing is with bonus, same thing is with provident fund. Once applicable, always applicable. It applies to everybody, skilled, unskilled, manual, supervisor, technical, clerical, anybody. And it is applicable to apprentices also. It is applicable to apprentices also. जो लोग contract worker नहीं है, जो लोग company worker नहीं है, but they are apprentice. As a part of their curriculum, they had to get themselves, enrolled. जैसे ITI. तो ITI करने के बाद apprenticeship is compulsory. So industry will deploy them. उसको hire करेंगे.
these apprentices are also covered under this act. मतलब working condition appointment order उन लोगों के लिए भी होना चाहिए. Okay. Appropriate government and certifying officers, as of now, we skip. Employer, again, occupier, or as defined in the Act. Factory, as defined in Factories Act. Establishment, as defined in Payment of Wages Act 1936. So one more question to you. What is the definition of establishment as per Payment of Wages Act 1936? Okay. So a lot of work to do in this week. Please spare some time. Take the help of Google Baba and get it resolved and try to get the answers. Okay. क्या-क्या है standing order में? In standing order, the definition or clarification of workmen, whether they are temporary, what is casual, what is apprentice, it is defined in the standing order. The type of employment, किस तरह से आपको वर्कर को इंटीमेट करना है ना, the appointment letter, appointment order and everything. It also has the shift working, कितना घंटे का शिफ्ट, क्या ड्यूरेशन, कितने बजे चालू होगा, कितने बजे खत्म होगा, अटेंडेंस एंड देयर लेट कमिंग अर्ली गोइंग का मार्किंग, देन सस्पेंशन और डिसमिसल फॉर मिसकंडक्ट, आप कब किसी को सस्पेंड कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, और क्या क्या मिसकंडक्ट है, किस किस चीज को मिसकंडक्ट की कैटेगरी में रखा गया है. काम के स्थान पे सो जाना, वेदर इट इज ए मिसकंडक्ट. झगड़ा करना, वेदर इट इज ए मिसकंडक्ट. अपने बॉस की बात नहीं सुनना, वेदर इट इज ए मिसकंडक्ट. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स आर डिफाइंड. क्या मिसकंडक्ट है और अगर गलती है तो उसकी सजा क्या है. ओके, द प्रोसेस इज दैट इस एक्ट में एक जनरल गाइडलाइन दिया है, मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर में एक जनरल गाइडलाइन दिया है कि ऐसा होना चाहिए. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव देयर ओन स्टैंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द एक्ट. उस एक्ट में जो लिखा है उसके प्रोविजंस को कंसिडर करते हुए वो अपना एक स्टैंडिंग ऑर्डर बना सकते हैं, अपनी कंपनी के खुद के कायदे कानून. एंड देन इट हैज टू बी सर्टिफाइड. It has to be certified before applying this standing order. It has to be certified. So labor office में फैक्ट्री इंस्पेक्टर के पास भी उसका कॉपीज जाएगा. They will read it vis-a-vis the act. They'll endorse and they'll certify, and then copy will come back to us as an employer. Now that becomes the standing order for our organization. एम्प्लॉयमेंट का टर्म्स एंड कंडीशंस होना चाहिए, सर स्टैंडिंग ऑर्डर में लिखा है. ओके, सो व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर माय ऑर्गेनाइजेशन? आई विल मेंशन इन माय ड्राफ्ट ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर, एंड आई गेट इट सर्टिफाइड. ओके, एंड देन दैट बिकम्स ए गाइडलाइन टू ऑपरेट माय ऑर्गेनाइजेशन. सो 5 copies, it will go to the factory inspector. Within 6 months he will have to endorse it. अगर नहीं किया कुछ भी तो देन इट इज डीम्ड अप्लाइड. और अगर आपने आपका खुद स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं बनाया, आपके खुद के कोई गाइडलाइंस नहीं है, तो इन दैट केस जो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर में प्रोविजंस है वो सारे आपको एप्लीकेबल होते हैं. ओके, प्रोसेस फॉर सर्टिफिकेशन एज ऑफ नाउ वी विल लीव इट, वी विल नॉट डिस्कस इट. ओके, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच इज एक्शनेबल. व्हेन यू गो एंड डू इट देन इट इज रिक्वायर्ड. किसको भेजना है, कौन करेगा. Okay, this is something you should
No. Section 14 of the central rule talks about disciplinary action for misconduct. आप क्या कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि वो मिसकंडक्ट है, तो आप क्या कर सकते हैं? उसके मंथली वेज का 2% आप उसको फाइन लगा सकते हैं। आप उसको कम से कम 4 दिन के लिए, अधिक से अधिक 4 दिन के लिए सस्पेंड कर सकते हैं विदाउट एनी पेमेंट और एनीथिंग। ये 2 चीजें हैं जो आप ले सकते हैं। These are 2 action that you can take immediately if you find any thing as a misconduct. Now, what is misconduct? हाँ जी, So anything which is not appropriate at the workplace according to the organization which have already been decided कि ये चीजें नहीं करनी है, जैसे सोना नहीं है, जैसे बाकी चीजें अभी आपने काम करते करते सीटी बजाता है। like there yes sir, that will also count in misconduct. हाँ, किसने बोला? इसमें क्या मिसकंडक्ट है? Sir, that is not appropriate because if you have not like obviously guard है तो उसको सीटी बजाना है उसका काम, but अगर उसके अलावा कोई और कर रहा है तो वो नहीं। मैं ऐसा काम करते करते मैं एक लेटर ड्राफ्ट करता हूँ और बैठे बैठे मैं ऐसा विस्लिंग कर रहा हूँ, सीटी बजा रहा हूँ, क्या मिसकंडक्ट है इसमें? सर उस वर्क सर जिस एनवायरनमेंट भी के आपके हिसाब से एग्जैक्टली सर, अगर हमारे एक सर्टेन एक्शन से कोई और डिस्टर्ब हो रहा है और वो वहां के रूल रेगुलेशन में ऑलरेडी आपको बता दिया गया है दैट यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस, तो वो मिसकंडक्ट में काउंट किया जाएगा। Unless otherwise it is explicitly mentioned in your standing order, सीटी बजाना कोई मिसकंडक्ट नहीं। यस और नो? यस सर, आप रास्ते में बजा खड़े हैं, सकते हैं। आप रास्ते में खड़े हो, आपके दिमाग में गाना आ गया, आप सीटी बजा रहे हो, यू आर जस्ट विस्लिंग दैट सॉन्ग, इज अ मिसकंडक्ट? नो सर। नहीं बट ना। सर अदर विल गेट डिस्टर्ब ना। आप एक बस स्टैंड पे खड़े हैं, कोई लड़की खड़ी है और आप उसको देख के सीटी बजा रहे हैं, मिसकंडक्ट। इट्स अ मिसकंडक्ट डिफाइंड बट नॉट एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर, नॉट एज पर दिस एक्ट। इसमें एक्सप्लिसिटली डिफाइन की क्या क्या चीजें हैं जिसको हम मिसकंडक्ट गिनेंगे। दैट विस्लिंग इज ए मिसकंडक्ट अंडर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट। Okay, there it's a misconduct, but not as per this particular standing order. Okay, there they have defined what all things are considered as misconduct. इसमें आप ऐड कर सकते हैं काम के स्थान पे सीटी बजाने से मिसकंडक्ट, काम के स्थान पे गाने सुनने से मिसकंडक्ट। सपोज यू हैव ए मोबाइल फोन, आपने कान में हेडफोन लगा के आप गाना सुन रहे हो और आप काम भी कर रहे हो, so it can be misconduct if you have mentioned in your standing order. Mobile phone is not allowed at workplace. If you have defined it in the standing order, approved, then it's a misconduct, and then it calls for a punishment. Otherwise, willful insubordination, जानबूझ के अपने साहब की बात नहीं मानना, खुद या ग्रुप में, है ना, सबने मिलजुल के मास बंक, आज प्रोफेसर आएंगे हम ही क्लास में नहीं जाएंगे, इट्स ए मिसकंडक्ट, है ना। आप खुद करो या सारा क्लास मिलकर नक्की कर लेंगे आज जाना ही नहीं, देखते हैं कितना पढ़ाते हैं, जैसा आप लोग हर बार कर डालते हो। 6 बजे क्लास है, गायब। विलफुल इनसबऑर्डिनेशन, जानबूझ के नहीं करना। ओके, देन थ्रेफ्ट, फ्रॉड, डिसऑनेस्टी, चोरी चमारी, नुकसान, प्रॉपर्टी डैमेज करना, इलीगल ग्रेटिफिकेशन, रिश्वत लेना या देना। ओके, ऑल दीज आर एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट। हैबिचुअल नेग्लिजेंस और नेग्लेक्ट ऑफ वर्क, काम की जगह पे सो जाना, इट्स नेग्लेक्ट ऑफ वर्क। ओके, सो ऑल दीज आर एक्ट ऑफ
misconduct. Okay, so these are the misconducts which have been defined in the act itself. और इसके अलावा एज आई सेड सीटीबीटी बजाना लिखना है तो इसमें लिख सकते हैं. Okay. हमारे खुशी को जोर से चिल्ला दिया तो एज मतलब इट इज नॉट एप्रोप्रिएट परहैप्स, इट्स नॉट अ मिसकंडक्ट. So this is all defined in the schedule of this particular act and the punishment also. आप मैक्सिमम 4 दिन का सस्पेंशन दे सकते हो या उसका जो भी इनकम है उसका 2% एज ए पेनल्टी आप एज ए फाइन आप उसके ऊपर इम्पोज कर सकते हो. ठीक है, 4 दिन से ज्यादा सस्पेंशन अगर है तो देन देयर इज अ प्रोसेस सस्पेंशन पेंडिंग इंक्वायरी. मतलब आप उसको उसके मिसकंडक्ट को एनालाइज करने के लिए 4 दिन से ज्यादा अगर सस्पेंशन है तो आपको उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा एंड देन यू विल हैव टू पे सब्सिस्टेंस अलाउंस. जितने दिन वो सस्पेंड रहेगा उतने दिन का उसको पैसा आपको 50% ऑफ वेज देना पड़ेगा. अगर इट इज मोर देन 4 days, अप टू 4 days इट इज विदाउट एनी सब्सिस्टेंस अलाउंस. सो पहले 90 दिन 50% ऑफ द वेज और उसके बाद 75% of the wage as a subsistence allowance if the person is suspended and is not on the work. Okay, everything are clear in the act. Any disciplinary action, it has preliminary investigation. मामले की जांच फौरी तौर पे initial investigation FIR. Then after getting all the evidences, then the issuing of charge sheet. जिस आदमी ने गलती की है उसको लिखित में ये देना कि उसने कब कहां कितने बजे क्या गलती की थी विद ऑल डिटेल्स. ओके, देन देयर इज अ सस्पेंशन पेंडिंग इंक्वायरी, देन देयर इज अ डिस्कशन, इंक्वायरी इज डन, उसके पीछे के उसके तह तक जाएंगे एंड देन फाइनली विल अवॉर्ड द पनिशमेंट कि उसको क्या सजा देना है. उसको नौकरी पे रखना है, निकाल देना है, उसका इंक्रीमेंट कम कर दो, उसको डिमोट कर दो, 15 दिन छुट्टी पे भेज दो, वॉट एवर इट इज, या कोर्ट मार्शल कर दो. सो ऑल डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी एंड ग्रेविटी ऑफ द इंसिडेंट और मिसकंडक्ट. बट लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस टू बी फॉलोड. अन्याय नहीं होना चाहिए किसी के साथ. दोनों पक्षों को सुनना, उसके लिए सारे सबूत इकट्ठे करना, जैसा कोर्ट में होता है वो सेम कार्यवाही हमको करनी है. तो पूरी तौर से एकदम सुनिश्चित होने के बाद ही कोई भी एक्शन उसके खिलाफ लिया जाना चाहिए. दैट इज द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग द इनडिसिप्लिन या मिसकंडक्ट. सो दीज आर 2 acts which are important from HR's perspective. Model Standing Order, Industrial Standing Order Act. This is important for disciplinary actions. And the other one was contract labor regulation abolishment. That is to ensure that working conditions of the contract labor is appropriate. Okay. So assignments are already there with you. Go through those questions. Study those 3 caselets and try to capture maximum information about those questions and these 3 caselets within a week's time. And then we will discuss these things in next session. And we'll take up another topic called HR analytics, which is a new concept in the field of HR. Okay. Madam, क्या पढ़ा रहे? What was the topic last week? Sir, SOPs. SOPs and policies. See. So policies are different, SOPs are different. There are 2 different documents. Okay, policies are general guidelines as derived from this code of conduct or factory rules. And then to enforce those policies, there is a mechanism, which is your standard operating procedure, yeah, SOPs. Yeah, OCPs, operational control procedures. Done. So next week, we will also see one of the contract, like how a labor agreement or labor contract is made.
I'll put it on the group as well in between so that you can refer and you can study this. Okay. क्या क्या ध्यान रखना है वो हमने आज डिस्कस कर लिया. If you have any question, then you can let me know. Otherwise, enjoy the rain, enjoy the pakoda. No questions? No, sir. Pakodas are waiting. Everything is clear. My God. There is no pakoda in hostel. तो हॉस्टल से चोरी वोरी मंगा नहीं लेते वार्डन को ऐसा थोड़ा सा कुछ ले दे के? नहीं सर. इवन 7 बजे के बाद बाहर भी नहीं जा सकते. हाँ हाँ, लेकिन 6 पकौड़े तो महीने अंदर आ से सकते. सैटरडे संडे को बाहर नहीं गई हूँ सर. पकौड़े तो अंदर आ सकते हैं ना. यस पकौड़े सर. तो डोरी में बांध के अंदर आ सकते हैं, बालकनी से डोरी गिरा के. जैसे नोट नीचे भेजने का उधर से पकौड़ा ऊपर लेने का, ऐसा तो कर सकते हैं. नहीं. तो पता चला नोट रख लिया, पकौड़ा मिला ही नहीं. फिर जा भी नहीं सकते पहले लड़ाई पकौड़ा बाद करने. में नोट, ऐसा बोलने का. सीधे भी हो सकता है, पकौड़ा खा लिया पैसे नहीं दिए. तो वो तो कभी पकड़ ही लेगा जब तुम बाहर निकलोगे तब. उसको रिस्क कम है. यस सर. आपको रिस्क ज्यादा है, पैसे का और पकौड़ा नहीं है तो रिस्क ज्यादा है. उसने पकौड़ा दे दिया तो कभी वसूल तो कर ही So we लेगा. are not अगेन very fond of प्रिंसिपल पकौड़ा. प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एंड कॉन्ट्रैक्टर जैसा है. यस सर. वहाँ पे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मिसकंडक्ट विल वाला लगा प्रोवाइड देंगे, एंड बोलेंगे अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी आज ही पढ़ा है. है ना. बस बस बस. So I'm just experimenting. यस सर. Anyway, so enjoy your weekend, whatever is left today. Have a wonderful Sunday till madam takes the class tomorrow evening, and we'll meet next week. थैंक यू सर. Okay, sir. Thank you, sir. In between, if you're able to complete the task, you can put up on the group. Okay. Okay, so I can go through in between. ओके also. सर. Okay, sir. Okay, आप Okay. करोगे नहीं मुझे पता है. इतना ओके ओके कॉन्फिडेंटली बोलने का मतलब है कि ठीक So है you सर, are तो doctor also. देख लेंगे. सर हमारे हर एक एक्शन आप पहचान कैसे लेते हो? सब ऐसा धूप में सफेद किया ना जो इसके हुआ नहीं लिए. होता वो भी पहचान. बच्चे मेरे घर में भी जो हैं, मैं भी प्लान भी बच्चा नहीं था. कर रहे होते वो भी पहले ही आप एक्सपोज कर देते हो. मेरे घर में भी बच्चे हैं, मैं भी बच्चा था, मैं भी इस एज से निकल के आया हूँ, है ना. तो ये सब Yes. चीजें हैं जो, if it is a reason it is acceptable, if it is an excuse it is not acceptable. Yes, sir. है ना. टाइम नहीं मिला अगर एक्सक्यूज है We'll give a reason of excuse. तो then I understand what is reason and what is excuse. Okay. No, sir, we'll not do it. We'll be disciplined and honest about Oh, I'm obliged. आदर्श विद्यार्थी मिले हैं मुझे, ऐसा मान लेता हूँ. बाकी तो अगर विद्यार्थी का संधि विच्छेद करेंगे तो विद्यार्थी ऐसा बनता है वो. सर इतना गंदा संधि विच्छेद. ऐसे मतलब बोलो उसका. की अच्छी बात है. विद्यार्थी का संधि विच्छेद यही हुआ ना, विद्यार्थी. नहीं सर, तो पता नहीं सर, बट ये नहीं होता होगा बिकॉज अर्थी इज नॉट अ गुड वर्ड. पर जो आप मीनिंग चलो, बता रहे हो वो मीनिंग हम नहीं सीखेंगे. तो ये भी एक असाइनमेंट है, विद्यार्थी का संधि विच्छेद पता करके आना. Okay, sir. ओके. क्या की अर्थी उठाए वो विद्यार्थी. चलो, एंजॉय योर थैंक यू टाइम. सर. See you next week. Bye bye. Thank you, sir.